Hello बच्चों, let's see the question. The question is state and explain. Part A is Boyle's law. Part B is Charles law with graphical representation. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें दो पार्ट दिए गए हैं. वन इज द बॉयल्स लॉ का हमें स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन भी देना है एंड चार्ल्स लॉ की भी हमें स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन और चार्ल्स लॉ को हमें विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक्सप्लेन करना है. सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट. तो बच्चों गैसेस जो हैं, गैसेस की जब हम बात करते हैं, गैसेस की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं एंड दीज यूनिक प्रॉपर्टीज इज बेसिकली रिलेटेड टू द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स. जो उनमें एटम्स का अरेंजमेंट होता है, उनमें लार्ज डिस्टेंसेस होती हैं. ठीक है, दे आर डिस्टेंटली प्लेस्ड. उसका रीजन ये है कि उनमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, दे आर रैंडमली मूव अराउंड. ओके, तो इसकी बेस पे वी हैव सर्टेन गैस लॉज जिसमें वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, ओके, एंड वी कैन से द नंबर ऑफ मोल्स, इनको आपस में रिलेट किया जाता है. ओके, दे बिकम अ सेट ऑफ गैस लॉज. तो उन्हीं गैस लॉज में से एक हमें पहले एक्सप्लेन करना है एंड स्टेटमेंट भी देना है, दैट ऑफ द बॉयल्स लॉ. सो वी हैव फर्स्ट द बॉयल्स लॉ. सो देखते हैं कि बॉयल्स लॉ बेसिकली क्या है. तो बच्चों बॉयल्स लॉ को हम इस तरह से समझ सकते हैं. अगर हमारे पास एक सिस्टम है, वी हैव अ सिस्टम लाइक दिस, और इस सिस्टम में हमारे पास कुछ गैस भरी हुई है, कंटेनर जिसमें गैस के मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं एंड वी हैव अ पिस्टन, अ मूवेबल पिस्टन इज फिट इन इट. ठीक है, जिसकी मदद से हम वी कैन इंक्रीज द प्रेशर. वी हैव दिस मूवेबल पिस्टन जिसको हम मूव कर सकते हैं अंदर बाहर की तरफ. इसको हम एज जो सिरिंज होता है उसकी लाइक दैट वी कैन इमेजिन दिस. ठीक है, इसको विजुअलाइज कर सकते हैं. उसमें जो पिस्टन में जो उसमें जो वी कैन से पंप जो होता है सिरिंज में, तो वी कैन एज्यूम कि उस तरह का एक पिस्टन हमारे पास होगा जिससे हम जो एक मूवेबल होगा. ठीक है, मूवेबल पिस्टन होगा. सो इन दिस सिस्टम वी हैव द गैस मॉलिक्यूल्स. सो व्हाट विल हैपन अगर हम यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करते हैं. वी नो कि जो गैसेस होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी. अगर यहाँ पे हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं इस पिस्टन पे, वी आर इंक्रीजिंग द प्रेशर, व्हाट विल हैपन यहाँ पे पिस्टन जो है इट विल मूव इनसाइड. ठीक है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो कंप्रेसिबल होते हैं, ये कंप्रेस, वो जब उन पे प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे द मॉलिक्यूल्स विल कम क्लोजर टू ईच अदर. एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन यहाँ पे क्या होगा, जो पिस्टन है वो अंदर मूव होगा एंड एज अ रिजल्ट द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी रिड्यूस्ड. फॉर एग्जांपल लेट्स विजुअलाइज कि हमने इसको प्रेस किया एंड द गैस गॉट कंप्रेस्ड. तो एज अ रिजल्ट जो ये गैस यहाँ पे है, गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेशर के इंक्रीज करने पे इसका वॉल्यूम कम होगा. सो दिस इज व्हाट इज बेसिकली द बॉयल्स लॉ. तो बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट जो है, इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट, यस वन, यहाँ पे एक शर्त ये है, एक क्राइटेरिया हमें रखना है कि वी हैव टू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट. कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये चीज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को फ्लक्चुएट करेंगे देन द ऑब्जर्वेशन विल बी समथिंग एल्स. सो इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, the the volume of a given mass of a gas is inversely proportional to the pressure to the pressure exerted by the gas. क्लियर, क्योंकि जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो गैस भी यहाँ से प्रेशर इसके
रेस्पॉन्स में प्रेशर इंक्रीज करना चाहेगा, ठीक है, उसमें उसका भी प्रेशर इंक्रीज होगा। सो विल ऑब्जर्व दिस थिंग। तो इस रिलेशन को, इसको हम मैथमेटिकली भी रिलेट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। सो वी कैन राइट कि जो वॉल्यूम होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। क्लियर? सो वी कैन आल्सो राइट दिस एज V जो होता है दैट विल बी इक्वल टू K by P, जहां पे K एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और वी कैन राइट कि V जो है V into P, प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर इज कांस्टेंट, इज K, दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। So that means at given temperature the product of volume and pressure is constant always for any gas. So अगर पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम एक गैस जो है वो ऑक्यूपाई, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम V ऑक्यूपाई करता है, V1 ऑक्यूपाई करता है, बिकॉज वी आर चेंजिंग द प्रेशर। ठीक है, अगर एक गैस जो है पर्टिकुलर प्रेशर पे उसका वॉल्यूम वॉल्यूम V1 है, एट V1 एट P1, जब हम प्रेशर, जब इस पे प्रेशर P1 है देन द वॉल्यूम विल बी V1, एंड एट प्रेशर 2 जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम विल चेंज टू V2. Okay, so that means at that time we can relate these changes. So at that time the P1, the product of P1 V1 will be equal to product of P2 V2, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट होंगे। ओके, द प्रोडक्ट विल बी कांस्टेंट, सो इनमें हम आपस में इस तरह से, इस चेंज को हम इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन द बॉयल्स लॉ। नाउ कम्स द चार्ल्स लॉ। So we have the Charles law. So बच्चों चार्ल्स लॉ जो है this relates volume with the temperature. ठीक है, अगर हम सेम सिस्टम लेंगे एज वी डिस्कस्ड इन लास्ट इन द बॉयल्स लॉ, तो अगर हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें गैस भरी हुई है एंड वी हैव द मूवेबल पिस्टन इन इट, एंड व्हाट वी डू, इसमें गैस के पार्टिकल्स हैं एंड वी आर हीटिंग द सिस्टम, वी हीट द सिस्टम। हम इसको, इस सिस्टम को हीट करेंगे, व्हाट विल हैपन, जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की, गैस पार्टिकल्स की, वो इंक्रीज होगी। एज अ रिजल्ट दे विल एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन द मींस जो कंटेनर है एंड कोलिजन्स विल बी मोर, मींस जहाँ पे प्रेशर का एक्सर्शन ज्यादा होगा। ठीक है, जब हम ये सिस्टम लेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे जो गैस है दैट विल एक्सपैंड, यहाँ पे गैस का एक्सपेंशन होगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, दैट विल बी इंक्रीज इन द वॉल्यूम। सो this is how Charles law relates volume with the temperature. So it states that that at pressure constant pressure, states that at constant pressure, we'll write it more clearly, it states, okay, so it states that at constant pressure the volume of the volume of a fixed amount of gas, fixed amount of gas is directly proportional is directly proportional to its absolute temperature. Okay, so this is a statement of Charles law कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें देन जो वॉल्यूम होगी, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उस गैस का जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन्स द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर. ओके, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर. सो मैथमेटिकली वी कैन रिलेट इट लाइक दिस. सो वी हैव वॉल्यूम जो होता है that is directly proportional to temperature. We can write this as volume is equal to K into T, where this K is the constant of proportionality, or we can write V by T is equal to K. ये जहाँ पे V volume है, T is the temperature, and K is the constant of proportionality. So this is the constant of proportionality. Okay, तो मीन्स जो रेशियो है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट. क्लियर. अब अगर हमारे पास एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें चेंजिंग टेम्परेचर है, देन द वॉल्यूम विल आल्सो चेंज. सो वी हैव अ सिचुएशन जहां इनिशियल टेम्परेचर T1 था, देन एट दैट टाइम द वॉल्यूम वाज V1. जब टेम्परेचर T2 इसी सिस्टम का हुआ तो ऑब्वियसली वॉल्यूम विल बी V2. सो इन दिस केस द टू चेंज विल बी रिलेटेड. यहाँ पे जो होगा द V1 T1 का जो रेशियो होगा that will be equal to V2 by T2. Clear? So this is how we can explain the Charles law. Now expressing this thing in the graphical representation में अगर हम इसको show करें, so we have the graph like this. ये will be comparing volume in ml with the temperature in Kelvin. Okay, so we'll get a straight line like this. This is the origin. In Kelvin scale जो absolute temperature होता है that is 0 Kelvin. ठीक है, that is 0 Kelvin. And for the Celsius scale we have the absolute temperature, the minimum possible temperature in Kelvin scale it is 0, and in degree Celsius it is minus 270 273 degree centigrades. So अगर हम टेम्परेचर को केल्विन में एक्सप्रेस करें देन वी कैन रिप्रेजेंट दिस चार्ल्स लॉ बाय दिस ग्राफ. और अगर हम टेम्परेचर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे इन डिग्री सेंटीग्रेड्स, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड्स, देन वी हैव सॉरी दिस इज वॉल्यूम इन mLs, दिस इज वॉल्यूम इन ml. सो यहाँ पे भी हमें ग्राफ मिलता है, बट बिकॉज इस केस में जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस में जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है दैट इज जो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है दैट विल बी minus 273. सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस इज द ग्राफ. क्लियर? So this is the explanation of Charles law with the graphical representation. So hope you understood it well. Best of luck.